Good morning, dear student. This is your teacher Randeep Kaur from Government High School, Mandigam, and today our topic is acceleration. Well, you all have experienced this acceleration. Um, हम सब जब भी किसी कार में बैठते हैं वेदर इट बी बस कार ट्रक तो जब भी ड्राइवर स्टार्ट करता है गाड़ी और रैपिडली स्पीड गेन होती है तो हम वी गेट पुश्ड बैक अगेंस्ट आवर सीट and similarly when driver applies brake we get pushed ahead and if we are turned sharp right turn leta hai driver so we get pushed towards left. These are all situations where we are accelerating, so we all have experienced this change in velocity which is known as acceleration. So aaj hum explain karenge what is acceleration. Basically, स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन. सो हमने स्पीड के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. दैट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन. एक्सेलरेशन इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. सो एक्चुअली एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी. जितनी ज़्यादा वेलोसिटी चेंज होगी वही होती है एक्सेलरेशन. सो लेट मी एक्सप्लेन व्हाट डज दिस मीन. So we'll move on to the next slide. Acceleration. Velocity includes speed and direction. So as you can see, velocity is speed along with the direction because it is vector quantity. जो velocity होती है वो vector quantity होती है and it जब भी velocity change होगी that means a body is acceleration or accelerating. जैसे आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा fast वो गाड़ी चली, what direction, उसकी direction क्या थी? यानी कि अगर हम स्पीड की बात करें तो हम उसमें डायरेक्शन इंक्लूड नहीं करते. क्यों? क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है. बट अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात करें तो वी फोकस ऑन डायरेक्शन. सो एक्सेलरेशन ऑकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स स्पीड और डायरेक्शन और बोथ. सो या तो ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड चेंज करेगा या डायरेक्शन चेंज करेगा या मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड मीन स्पीड और डायरेक्शन चेंज करेगा. सो चेंज इन वेलोसिटी इज acceleration. Speeding up or slowing down. See, when a car speeds up, that is positive acceleration. यानी कि अगर एक गाड़ी है उसने ज़ीरो से स्टार्ट किया और उसने स्पीड गेन की 30 पे पहुंच गई 40 पे पहुंच गई, that means it is showing positive acceleration. Or simply we can write when final velocity is greater than initial velocity, that is known as positive acceleration. Similarly, what is negative acceleration? Negative acceleration means when a car slows down, that is negative acceleration. It is also known as deceleration or retardation. So retardation क्या है? एक्चुअल में जब भी एक बॉडी फास्ट मूव कर रही होती है और अचानक से कहीं ट्रैफिक सिग्नल पे या स्पीड ब्रेकर पे उसको स्पीड कम करनी पड़ती है, दैट इज नोन एज डिसेलरेशन. दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल velocity, that is speeding up or slowing down. In both cases this is acceleration. But if a body moves with constant speed, यानी कि वो 80 किलोमीटर पर आवर चल ही रही है, ना कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है, that means the acceleration is zero. There is no acceleration in that case. Acceleration formula. Well, the formula for acceleration. What is acceleration? It is change in velocity or rate of change in velocity over time. So it is also defined as the ratio of change in velocity of a body to the time taken for bringing the given change. So it's a vector quantity. Change in velocity की बात करें तो that means final velocity minus initial velocity over time. That means acceleration is equal to final velocity minus initial velocity over time. So इसका SI unit जो है that is meter per second square. Positive acceleration. तो अभी मैंने आपको बताया एक्सेलरेशन दो टाइप की होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होती है? बेसिकली अगर एक मोटर बाइक है उसने रेस्ट से स्टार्ट किया, रेस्ट से मतलब जीरो, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? जीरो, एंड एक्सेलरेट्स टू 80 मीटर पर सेकेंड इन 20 सेकेंड, यानी कि उसकी स्पीड कैचअप की 80 मीटर पर सेकेंड पहुंच गया इन 20 सेकेंड्स. तो what is acceleration? So acceleration we know is final velocity minus initial velocity because the body was at rest. So initial velocity
velocity क्या है 0 over 20 second. So acceleration is 4 meter per second. 80 upon 20 is equal to 4 meter per second. So this is graph for positive acceleration. Actually this is velocity time graph where time is along x-axis and velocity is along y-axis. So हमें already पता है, मैंने बताया भी था, जो time है वो independent variable है, it is along x-axis, and जो velocity है वो dependent variable है, so it is along y-axis. So आप यहाँ पे इसका graph देख रहे हैं, it is जो इसका graph है is an upward curve. क्यों है ये upward curve? Because it explains the nature of positive acceleration, which is due to relatively large velocity along y-axis. So large velocity in lesser span of time. यानी कि एक body constant speed से velocity से move कर रही थी and अचानक से उसकी velocity increase हो गई in lesser span of time. That is known as positive acceleration. नाउ नेगेटिव एक्सेलरेशन और डिससेलरेशन या जिसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं. फॉर एग्जांपल अ स्केटबोर्ड और अ कार मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट 3 मीटर पर सेकेंड. सो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 3 मीटर पर सेकेंड है एंड कम्स टू अ स्टॉप इन 2 सेकेंड. सो स्टॉप हो गई तो in final velocity क्या हुई 0. So in 2 seconds, so time is 2 seconds. So initial final velocity minus initial velocity upon 2, 3 upon 2 is 1.5, but this is minus 1.5. So it shows a retardation of minus 1.5. The negative acceleration shows that the velocity of a body is decreasing. So this shows that the velocity of the body is decreasing, whereas in positive acceleration, velocity of body is increasing. So this is the graph for deceleration or retardation, which shows that there is decrease in motion. So it is a downward slope, or we can say it is a negative slope. Time जो है वो x axis पे है, velocity y axis पे है. So body constantly move कर रही थी, अचानक से उसकी deceleration हो गई, यानी कि जो body है उसकी जो speed है बहुत कम हो गई in the span of time, in this span of time. So that is known as deceleration. This is all about acceleration. Thank you. Have a nice day.